अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में देखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको हम देखते हैं ब्रीफली। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉज इन रिगार्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द लॉ एक्सप्लेन्स common feelings of every consumer. Suppose a person starts consuming apples one after another. The first apple gives him the maximum satisfaction as he might be in mood of taking some food at that time for meeting his appetite. As he takes the second apple, he gets less satisfaction because by this time he has already met some level of appetite. So we move on to our next slide. The third and more apples yields him lesser satisfaction or utility. It means that every time the consumer increases his consumption, he gets less and less satisfaction. The satisfaction also tends to be zero when the consumer feels totally disgusted to take any more apples. If he takes more, his satisfaction turns negative or utility now becomes disutility. So now we move on our next slide. Thus, law of diminishing marginal utility states that additional satisfaction a person derives by consuming a commodity goes on declining as he consumes more and more of a that commodity. So we move our next slide. According to Marshall, the additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing diminishes with every increase in stock that he already has. So we move on to our next slide. Limitations of law of diminishing marginal utility. The law of diminishing MU has certain limitations. तो इसकी हम limitations को थोड़ा सा देख लेते हैं briefly. द यूनिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें द यूनिट्स कंज्यूम्ड मस्ट बी होमोजीनियस। तो उसने कहा जी यूनिट्स जो है वो कंज्यूम जो होने वो होमोजीनियस होने चाहिए। हैविंग सम साइज, उनका कुछ ना कुछ साइज होना चाहिए, और शेप, और उनकी शेप भी होनी चाहिए। यूनिट्स कंज्यूम्ड मस्ट बी कंटिन्यूस। द लॉ डज नॉट होल्ड गुड व्हेन देयर इज इनफ टाइम गैप बिटवीन कंजप्शन ऑफ टू यूनिट्स। फॉर इंस्टेंस, if we take second apple after a long gap of time, we may feel hungry and hence satisfaction will increase instead of falling. So we move on to our next slide. The taste of consumer should not change. It means that the person should consume all units of a good by some desire and pleasure. The law does not apply to money, as it is said that more money a person has, the more he wants. Income of consumer must be constant. Change in income of the consumer will falsify the law. If money income of the consumer increases or decreases during the time of consumption of a particular set of goods, the marginal utility will not fall as said above. Only one commodity must be consumed at a time. No substitute or complement be introduced. So we move on to our next slide. Units first, TU 10, MU 10 minus 0 10. Second 10, 10 minus 18 minus 10 8. And then third 24, 24 minus 18 is equal to 6. And 28, 28 minus 24 is equal to 4. Then fifth 30, 30 minus 28 then is equal to 22. And 6, 30 minus 30 is equal to 0. And 28 minus 30 minus 2. देन हम अगली स्लाइड में देखते हैं लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी। यूनिट्स टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी। यूनिट्स फर्स्ट यूनिट टोटल यूटिलिटी 10 मार्जिनल यूटिलिटी 10, एंड देन सेकंड 18 टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी 8, थर्ड 24 टोटल यूटिलिटी and marginal utility 6, and then 4 and 5 and 6 and 7, so on. So here is the graph draw, and you can see A, B, C as a dimension MU, and units, and on x-axis units of orange, and on y-axis marginal utility, and you can see MU 0 MU and from so on to 10. So MU curve is downward sloping because of the fact that consumption of successive units gives less satisfaction. तो दोस्तों यहाँ आज का टॉपिक यहाँ पे हम एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अब तक की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।